हरि ओम गंगे च मने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कुरुत्र गंगा प्रभासे प्रश्न एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्नानकळं विष्णु पुण्यानि श्रावण कृष्ण पक्षैका दस्यं च सत्य अनुसया मंदाकिनी तटे चद्य रोहिणी वृषभे स्थिते श्रीचन्द्रमसि तथ श्री भास्करे कर्करासिगे श्रावणमासि च द्वितीये तथा द्वितीया सौम्येति वासरे गोळन्त्र गौतमा गोत्री कैलासलोचनात्मक दुर्गा प्रसादमासाद्य कनकेश्वर कृपया कनकेशबुदेशाभ्यं आमानसुईश्वरस्य च करिष्येऽहमभिषेक मारत्रिकं च तर्पणम् सुरेश आपणिकस्यात्र दत्ताश्रयं च मे ततः कृता आराधनया काम्ये अहं च तस्य सुमङ्गलं जगन्नाथ परं च श्री हरिहरात्मकः प्रभु श्यामसुन्दररूपेण विश्वम्भरात्मक गुरुः जयदासरथिभ्यं च नारायणसुवैष्णव ईशानश्रीकराभ्यं च माधवांशस्वरूपिणः कृष्णकैलासवैद्यैश्च गोपीवाष्णुपितृपिता विघ्नेश्वर नरसिंहो श्रीराम भीमसेनदा दण्डपाणि कृपासिन्धुः श्यामसुन्दरभागतः महालक्ष्म्या सरस्वत्या चन्द्रमणिश्च रेखया नीलाराहासहेमादि कमलात्मा सुलोचनः भरद्वाजीयगोत्रेण मातृकुलीयपितरः राधाचरणवैदेही वनमालीश्च मुक्तया श्रीगणेशमतीभ्यां च वैद्यसुवर्ण्यति प्रिया भरतकृष्णभीमीश्च जनमधुत्रिलोचना सुनपद्मावती कुन्तु सा वासन्ती च चञ्चलः जगन्नाथ सरस्वत्या ऋषिकेशशुरमया रजनीकान्तपितॄणां मद्दातृपितृरूपिणां चिरवैकुण्ठसमाश्रित्य निवसतिरस्तु कामना नमामि चानसूयं च पतिभक्तिपरायणां नमाम्यात्रिमुनिं चात्र श्रीरामजानकीमपि नत्वहं च बुधेशं च जगन्नाथं नमाम्यहं नमस्करोमि नित्यं च गंगां रेवं च यमुनाम्। अथ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्ड षड्विंशः सर्गः। अभिवाद्य च कौसल्यां रामः सम्प्रतिस्थितो वनं कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठेवात्मनि स्थितः विराजयन् राजसूतो राजमार्गं नरेर्वृतं हृदयान्यामनमन्थेव जनस्य गुणवत्तया वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनं देवकार्यं स्मसा कृतज्ञा हृष्टचेतना अभिज्ञा राजधर्माणं राजपुत्री प्रतीक्षति प्रविवेशात् रामस्तु स्वभीष्मसु विभूषितं प्रहृष्टजनसम्पूर्णं ह्रिया किञ्चिद् अवाङ्मुखः अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्य शोकसन्तप्तं चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियं तं दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न सशाकमनोगतं तं शोकं राघवसोढं तत बिभ्रूतं गतः विवर्णवदनं दृष्ट्वा तं प्रस्मिन्नममाशनम् आहा दुःखाभिसन्तप्ता किमिदानीमिदं प्रभु अद्य बृहस्पत्य श्रीमान् युक्तपुष्येन राघव पृच्छते ब्रह्मणि प्राज्ञि केन त्वमसि दुर्मनः न च शतशलाकेन जलफेनानिभेन च आवृतं वदनं बल्गु क्षत्रेणाभिराजते व्यजनाभ्यं च मुख्याभ्यं शतपत्रनिभेक्षणं
चन्द्रहंस प्रकाशाभ्यं विज्यते न तवाननं वाग्मिन्नो बन्दिनश्चापि प्रहृष्टास्तं नरसभ स्तुवन्तो नात्र दृश्यन्ते मङ्गलैः सुतमागधाः न ते क्षुद्रं च दधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः मूर्ध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः न तं प्रकृतयः सर्वा श्रेणिमुख्याश्च भूषिताः अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा चतुर्विवेकसम्पन्निः हयैः काञ्चभूषणैः मुख्यपुष्परथो युक्ता किं न गच्छति ते अग्रतः न हस्ति चाग्रतः श्रीमन् श्रवलक्षणपूजितः प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघगिरिप्रवः न च कञ्चन चित्रं ते पश्यामि प्रियदर्शन भद्रासनं पुरस्कृत्य यातं वीरं पुरःसरम् अभिषेको यथा सज्जा किमिदानीमिदं तव अपूर्वपुमुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते इति विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः सीते तत्र भवन्तात प्रव्राजयतीमां वनं कोळे महति सम्भूते धर्मज्ञे धर्मचारिणि शृणु जानकी येनेदं क्रमेणाद्यागतं मम राजा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन च कैकेयी मम मात्रे तु पुरा दत्तो महावरो तयाद्य मम सज्जे अस्मिन् अभिषेके नृपद्यते पृच्छोजितसमयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः 14 हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः सोऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनं भरतस्य समीपे तु नहं कथ्य कदाचन रुद्धियुक्ता हि पुरुषान् सहन्ते परस्तवं तस्मान्न ते गुणा कथ्या भरतस्याग्रतो मम अहं तेनानुवक्तव्यो विशेषणे कदाचन अनुकूलतया शक्यं समीपे त्वसवर्तितुं तस्मै दत्तं नृपतेन यौवराज्यं सनातनं स प्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः अहं चापि प्रतिज्ञान्तं गुरो सामानुपालयन् वनमद्यैव यास्यामि स्थिरो भव मनस्विनी अमयाते च मयि कल्याणि वनमोनिसेवितं व्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वया नघे काल्यमुत्थाय देवानां कृतपूजां यथाविधिः वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः माता च मम कौसल्या वृद्धसन्तापकर्षिता धर्ममेवाग्रकृता त्वतः सम्मानमर्हति वन्दितव्यश्च ते नित्यं यः शेषा मम मातरः स्नेहप्रणयसम्भोगी समाहि मम मातरः भ्रातृपुत्रसमो चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः त्वया भरतशत्रुघ्नो प्राणिप्रियतरो मम विप्रियं न च कर्तव्यं भरतस्य कदाचन स हि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च आराधिता हि शीलेन प्रयत्निश्चोपसेविता राजा न सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्जये औरस्यानापिहुः पुत्रान् हि त्यजन्त्याधिकारिणः समर्थान् सम्प्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपः सातं वशेह कल्याणि राज्ञ समानुवर्तिनि भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रतपरायणा अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यामि हि भवामिनि यथा व्यलेखं कुरुषे न कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये श्रीमद् अयोध्याकाण्डे 16 सर्गः अथ
सती अनसूयाष्टकम् सती भक्तिस्वरूपेयं पतिपरायणा चिरा सा लक्ष्मी सा अस्ति च गौरी भारती विज्ञरूपिणा त्रिदेववालुतरूपिणामृतस्तनसेवका स्त्रीधर्म पालयन्ती सा मातृरूपेण सेविता अत्रिमुनिधृता पाणिरर्जिता ख्यातिरमृता अमराश्च गता भ्रान्त्या स्वस्वामिनो न चिन्तितः नूनमस्ति मतिर्यस्याश्चिरात्मधैर्यसन्धनं न्यूनास्ति न यति सौख्याच्चिरन्तानि सुजीवनि सूर्यस्तपति संसारे सजलधारया पुनः तृषाहरति च काले समीरेण च शीतलं यस्याश्च तपसा तेजो यस्याश्च वचनामृतं यस्याश्च भक्तिशैत्यं च तस्यार्नामानसूयता सीताम्लानवस्त्रेण चतुर्दश समा अर्जिता पतिभक्त्यानुकम्पेव रामभार्यातिवल्लभा करोमि नामनन्तं च अनसूयं च सभक्तिकं करोतु वर्धनं मम संसारे पतिभक्तितायः सती श्री अनसूयाय मन्दाकिनी तटे तटाश्रमे यन्मयाष्टकममीयं रचितं तत्तु सर्वथा पति पत्नी स्वधर्मत्वे सौख्यसौभाग्यमाश्रितौ भजेतामत्र सुदाम्पत्य जीवनस्य सुजीवनम् अथ ॐ ह्रीं श्री अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला मङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमाकृपा प्रणिहितानि गतानि मालाधुर्मुदकरीवमुत्पलेजा सामे श्रियङ्गिसुसागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदवे प्रमदानदैक्य मानन्दहेतुरधिकं मुरवेद्विषोपे ईशा निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्देवरोदरसहोदरमिन्दिराय आमीदिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरासुतकनीनिकपक्मनेत्रं भूतिर्भवेन्मम भुजङ्गशयङ्गनाय बाह्वन्तरे मधुजितासितकौस्तुभेजा हारावदेव हरिणीगमयी विभाति कामा प्रजा भगवतो विकटाख्यमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुदालिललितोरसिकैश्चवारे धाराधरे स्फुरतिजादर्जङ्गनीव मातु समस्तजगतान्महनीयमूर्ति त्रिभद्राणि मे दिशो भार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं पदमता किल यत्प्रभावान् मङ्गल्यभाजमजुमादिनिमन्मनेन मज्जावयमन्तरमीकणार्वं मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकाया दद्यादयानुभवनो द्रविणम्बुधारा मस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशुविषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनम्बुवाः इष्टाभिशिष्टमतयोऽपि जया जयाज दृष्ट्या द्रिभिर्नवपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रभुष्टकमलोदरदीप्तिभीष्टां पुष्टिं कुशिष्टमम पुष्करभीष्टराय गिर्जय बते त्रिगरुडध्वजसुन्दरीति
प्रातर्नमामि जगतं जननीमशेष लोकादिनाथगृहिणीं तदपुत्रीं कमले कमलाक्षबल्लभेत्न करुणापूर्वकरपाङ्गे अवलोकनां किञ्चन प्रथमपातं गुरुजस्तु बन्धे जयस्तु मोगरण त्रयमयि त्रिभुवनमधुरं गुणगुरुद्रवैदवैदं भवन्ति विभुतवाद शोभानधरं दर्शनं त्रिशूलवर्णं सकोरं इति सिंहसंग्रहविदयजलकं सम्पूर्णं श्रीगुरुचरणाभ्यङ्गं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु सगुण तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः गुरुदेवाय नमः आदि संग्रहाय नमो नमः ओम उग्रं वीरं महानरवादानगं सिंहं शरणबलमधुनामामि सप्तमकं नृसिंहानं सप्तमख्य महालक्ष्मी नमस्ते ओम श्री लक्ष्मी सिंहाय नमो नमः श्री लक्ष्मी सिंहाय नमो नमः ओम श्री लक्ष्मी सिंहाय नमो नमः हरि ओम गणानान्ता गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्ता प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्ता निधिपतिगुं हवामहे नमो नमः ओम श्री गुरुचरण सरोज राज निज मनमुकुर सदारि वरण रघुवर विमलते नमो नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे शम्भुं पुष्टिवर्धनं सर्वारोगं मृत्युमुखमामृतं नमो नमः बुद्धिसुराय नमो नमः बुद्धिसुराय नमो नमः बुद्धिसुराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा केदारेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा विश्वेश्वराय नमो नमः सोमेश्वराय नमो नमः नागेश्वराय नमो नमः नर्मदा त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः भीमशंकराय नमो नमः कृष्णेश्वराय नमो नमः ओंकारेश्वराय नमो नमः महाकालेश्वराय नमो नमः वैद्यनाथाय नमो नमः मल्लिकार्जुनाय नमो नमः रामेश्वराय नमो नमः लिंगराजाय नमो नमः लोकनाथाय नमो नमः ईशानेश्वराय नमो नमः चंडेश्वराय नमो नमः गोकर्णेश्वराय नमो नमः ब्रह्मेश्वराय नमो नमः कपिलेश्वराय नमो नमः गुप्तेश्वराय नमो नमः सत्यानुसयास्त ईश्वराय नमो नमः ओम नमो गंगाधराय नमो नमः ओम गंगाधराय नमो नमः गंगाधराय नमो नमः हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे ओम नमो नमन्दाकिनीश्वराय नमो नमः ओम नमो नमन्दाकिनीश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः सत्यानीश्वराय देवीश्वराय नमो नमः हरि उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं शरणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमामि ओम नृसिंहाय नमो नृसिंहाय नमो नृसिंहाय नमो ओम नमः भगवद्वादवालाय नमो ओम रंगनारायण ओम क्लीं कृष्णाय विना गोपीनाथ नमोदेवाय नमो क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीनाथ नमोदेवाय क्लीं कृष्णाय विना गोपीनाथ नमोदेवाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न गायत्री नमो नमः ओम ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी गंगा प्रभृति एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्थान कळवंगादि सप्तमातृका दिव्य नमो नमः गंगादि सप्तमातृका दिव्य नमो नमः हरि ओम दुर्गाय नमो दुर्गाय नमो दुर्गाय नमो ओम कर्णधाराय नमो कर्णधाराय नमो कर्णधाराय नमो नमः ओम पावकान सरस्वती वाजिवी वाजिनी यज्ञ मृत्युंजय सरस्वती नमो या कुंदिन तुषारहार धवला या शोभन वस्त्रांगृत या वीणावरदन्न मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत संग्रह प्रभुदेव सदा वंदिता सामां पार्थ सर्वभगवती निशेष जट्टंपः ओम सरस्वती नमो नमः ओम सिंह सीताय नमः रंगराधाय नमो नमः ओम संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सरीशं विश्वाधारणं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्व्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथनिवासनित्याय परमात्मने बलभद्रसुभजगन्नाथाय नमो जगन्नाथाय नमो बद्रीविशालाय नमो बद्रीविशालाय नमो ओम नमस्ते महामय श्री विचित्रपूज्यते संकटहर नमस्ते गुरुडारूढ कुलासुरभयंकरी सर्वपापहरे महालक्ष्मी नमस्ते ओम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव तमेव माता
नमो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो पुरुषेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो सुसपने वैकुंठं प्रति गच्छन्तं श्री गुरुचरणाभ्यो नमो नमः श्री हरिनारायण नमो नमः श्री हरिनारायण नमो नमः श्री हरिनारायण नमो नमः नमस्ते महामय श्री सर्वभुजते संगतनमस्ते नमस्ते गुणारूढ़ कुलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते श्री हरिनारायण नमो नमः। श्री हरिनारायण नमस्ते गुणारूढ़ कुलासुर भयंकरी सर्व पाप महालक्ष्मी नमस्ते श्री हरिनारायण नमो नमः गोविंदाय गोविंदन गोलवाय नमो नमः ओम सत्यानुसया ईश्वराय नमो नमः ओम हनुमते नमो नमः हनुमते नमो नमः हनुमते नमो नमः श्री गुरुचरणाभ्यं नमो नमः श्री रामचंद्राय नमो नमः ओम रामचंद्राय नमो नमः श्री हरिनारायण नमो नमः।